So guys, let's start chemistry IGCSE paper 6, which is alternative to practical. The code for this paper is 0620/62. That variance is basically reflect the alternate. The duration of this paper is 1 hour. Let's start October, November 2023. We need to attempt all the question, and the total mark for this paper is exactly 40, just like Cambridge examination. Okay. Question number 1. Some seashells contain a mixture of the insoluble compound, okay, calcium carbonate. First of all, calcium carbonate has two different aspects of solubility. All right. The first one is that it is insoluble in water. According to solubility chart, it is insoluble in water. And the second aspect of this solubility is it is soluble in acid. Because acid basis salt के chapter में हमने decide किया था, discuss किया था, equation share की थी कि calcium carbonate can react with acid. So it is insoluble in water, but soluble in acid. And silicon 4 oxide only. Again, a very prominent information is that silicon 4 oxide is basically an acidic oxide because it is a non-metal oxide. If it is an acidic oxide, then it means it is insoluble in both water and acid, because acidic oxide cannot react with acid. Okay. Calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid. That's the strategy. That's the point which I was telling you about this, to form a soluble salt of calcium chloride. Silicon 4 oxide does not react with or dissolve in dilute hydrochloric acid. As I have said, acidic oxide जो है वो acid से कभी भी reaction नहीं करता, which is why silicon 4 oxide cannot react with HCl. The equation for this reaction is going to be like this. Calcium carbonate is reacting with hydrochloric acid, converting into calcium chloride, which is soluble in water. Obviously, water is formed, and carbon dioxide gas must be given off. All right. A student wants to find the percentage of silicon 4 oxide in the seashell. The percentage find out करने के लिए mass of silicon 4 oxide over actual mass into 100 करेंगे. The first 4 steps of the method the student uses are shown. The student grinds the the seashell to form powder. Now the question is कि वो grind किस चीज के अंदर करता है? तो grinding हमेशा mortar और pestle के through होती है. Through mortar and pestle. Mortar and pestle की diagram आनी चाहिए आपको मेरी नजर में, because important है. हम कुछ इस तरह से बना के दे देते हैं आपको. ओके. ये आपका मोटर हो गया. और पेस्टल जो है वो आप इस तरह से बना सकते हैं. ठीक है. It has to be rounded from here. And let's suppose आपके पास इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है आप उसको ग्राइंड करेंगे इसके थ्रू. ठीक है. तो ये आपका पेस्टल हो गया, ये आपका मोटर हो गया. ओके.
Next is the student finds the mass of the powdered seashell. Okay. The student adds the powdered seashell to an excess of dilute hydrochloric acid. Why are we using excess amount of dilute hydrochloric acid? To make sure all the seashell react with acid. To make sure all the powder seashell react with HCl. And why are we using powdered? Powdered form obviously increases the surface area. And when surface area increases, rate of reaction increases. You guys should know that. Okay. The student filters the mixture as shown in figure 1.2. Okay. और अगर आप फिल्टर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको फिल्टर फनल चाहिए और एक आपको फिल्टर पेपर चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, फिल्टर फनल एंड फिल्टर पेपर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, और अगर आप फिल्टर करना चाह रहे हैं तो एक बात और यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे हम. एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम वो फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं आपसे. ठीक है. Part A. Name the apparatus used to grind the seashell to form a powder in step 1. Mortar and pestle. ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं. Explain why it is important that the dilute hydrochloric acid is in excess in step 4. तो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया to make sure कि सारे के सारे जो सी शेल है पाउडर फॉर्म में वो HCl से रिएक्शन कर ले. To make sure that all the powdered seashell should react with HCl. Now the next part is name the items of apparatus labeled A and B in figure 1.2. Let's move on to the next figure 1.2. That's basically the filter funnel, which is represented by A, and that's basically the conical flask, which is represented by B. So A is basically the filter funnel, and B is basically the conical flask. One more thing. In conical flask, you will get the filtrate, and you guys know that filtrate is a soluble part of solution. Whereas residue is basically the insoluble part. Okay. Let's move on to the next page. The residue obtained in step 4 is not pure. Identify one substance other than water that is in the residue and prevent it from being pure. तो आप जानते हैं कि जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड भी होगा, वाटर भी होगा और सिलिकॉन फोरऑक्साइड भी होगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. सो आप यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लिख सकते हैं. Is asking for the one substance, right? Or
silicon 4 oxide. Okay, this is asking for the one substance. The student washes the residue. Okay, describe two additional steps the student must now take to find the percentage of silicon 4 oxide in the seashell. Since it has 2 marks, so we can write technically 2 different points so that. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम रेजिड्यू कलेक्ट करते हैं इस जगह पर फिल्टर पेपर पे, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको वॉश करते हैं ताकि उसके अंदर अगर कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह हैं या कोई भी कैल्शियम क्लोराइड के ट्रेसेस हैं तो वो रिमूव हो जाए, राइट? So wash the residue with distilled water to remove any traces of calcium chloride. And the second thing is, जब कैल्शियम क्लोराइड हमें हासिल हो जाएगा, मतलब जब हमें रेजिड्यू हासिल हो जाएगा तो हम उस रेजिड्यू को ड्राई करेंगे ऑन द फिल्टर पेपर और उसका मास वेट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द परसेंटेज. ओके, so dry the residue on the filter paper. And then measure the mass of residue to get the percentage. Get the percentage of silicon 4 oxide, which is also called silicon dioxide. Okay, that's my first question, guys. Next question. A student investigates the temperature change. Temperature change is represented by delta H. Enthalpy change, जिसको कहते हैं delta T, sorry, my bad, delta T. Okay. When aqueous sodium hydroxide, which is an alkali, neutralizes dilute hydrochloric acid, which is an acid, the equation for this reaction is shown. The student does 6 experiments. By the way, whenever any strong acid react with any strong alkali, salt and water is formed, this process is called neutralization. And enthalpy change of neutralization is always negative, exothermic, which means delta H is always negative. And you know why it is exothermic, because OH negative ions reacting with hydrogen ions, so oppositely charged ions are involved in the formation of a covalent bond, which means it is a bond forming process, therefore it is exothermic, which is why its delta H is always negative. All right, so we need to plan 2 different experiments. I mean, we need to plan 6 experiments technically. Okay, fill the burette with dilute hydrochloric acid. That's a very, very important point. You need to fill the burette with dilute hydrochloric acid. So before filling, you must wash it with distilled water. And you guys need to rinse it with HCl. Okay. Run some of the dilute hydrochloric acid out of the burette so that the level of the dilute hydrochloric acid is on the burette scale, that is 0, 0, right? Fill the second burette with aqueous sodium hydroxide. Again, you need to wash it with distilled water and need to rinse it with NaOH. Run some of the aqueous sodium hydroxide out of the burette so that the level of aqueous sodium hydroxide is on the burette scale. Run 1 cm cube dilute hydrochloric acid from the burette into the boiling tube. 9 cm cube of aqueous sodium hydroxide from the second burette into the same boiling tube. Stir the mixture with a thermometer and measure the highest temperature reached.
Why are we stirring? Stir इसलिए करते हैं so that all parts of the solution will get uniform heat. So for uniform distribution of heat. Anyway, जब आप एसिड और एल्कली का रिएक्शन करेंगे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट you need to measure the pH of the mixture in the boiling tube. Rinse out the boiling tube with distilled water and then do the same experiment, but this time we need to consider 2 cm cube of dilute hydrochloric acid, whereas 8 cm cube of sodium hydroxide. तो technically हमने यहाँ पर टोटल वॉल्यूम दोनों का मिला के क्या लिया था 10. यहाँ पर भी हम दोनों एसिड और एल्कली का टोटल वॉल्यूम कितना ले रहे हैं 10. इसका मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे उसमें वॉल्यूम नीड्स टू बी ओवरऑल 10 cm cube. Volume needs to be overall 10 cm cube. Just hold. Okay. Volume needs to be overall 10 cm cube. Okay. Over here we have 3 and 7. All right. So in total we need to take 10 cm cube of both acid and alkali. Okay. All right. Use the description of the experiment in the thermometer diagram to complete table 2.1. Table 2.1 क्योंकि उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस पे वॉल्यूम लिया है तो इसका मतलब मुझे यहाँ जो वॉल्यूम देना है वो भी 1 डेसिमल प्लेस पे देना है. तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 9.0 लूंगा. यहाँ 2 है तो 8.0, यहाँ 3 है तो 7.0, यहाँ 4.0, देन 3.0 और यहाँ पर हो जाएगा टेक्निकली 2.0. तो टोटल वॉल्यूम दोनों का 10 होना चाहिए. ठीक है. थर्मोमीटर रीडिंग उसने आपको प्रोवाइड की हुई है. ऑलराइट. और वो आपसे कह रहे हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर रीच इन डिग्री सेल्सियस डिटरमिन करो. ये 25, ये 30. तो 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो ये हो जाएगा 26.0. ठीक है. 1 डेसिमल प्लेस पे ले लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस दिया हुआ है तो हमने टेम्परेचर को भी 1 डेसिमल प्लेस पे ले लिया. 26. Just let me check. 2 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो वो 1 डिग्री 1 डीपी पे नहीं ले रहे, 2 डिग्री पे ले. ओके. तो हम इसका मतलब 26 लेंगे जस्ट. ठीक है. इसके बाद ये कितना हो जाएगा 25, 26, 27, 28. Then we have 30. Then we have 30.5. Then we have 25, 26, 27, 28, 29. And then 21, 22, 22 and a half. So it's basically 22.5. Okay. Oh, not 22.5, guys. It's 27.5. Let me check my 30. Okay. Okay. So that's the 4 marks. Quite easy, isn't it? Because हमें सिर्फ ये कॉलम्स फिल करने हैं and 4 marks हमें मिल रहे हैं. That's an easy task. Let's move on to the next part. Add a suitable scale to the y-axis in figure 2.1. Your scale should extend it by 2 degree above your highest temperature in table 2.1. इसका मतलब ये कि मेरे पास जो highest temperature है वो 30.5 है. मैं इसमें अगर 2 डिग्री सेल्सियस ऐड करूंगा तो it's going to be 32.5, right? So मेरा जो y-axis का स्केल है वो 32.5 तक जाना चाहिए. So what we can do is कि just hold on a second, please. I'm sorry about back and forth. Volume of hydrochloric acid, highest temperature. Volume of hydrochloric acid and highest temperature change. So यहाँ से लेकर यहाँ
तक ये पूरा कॉपी करता हूँ ताकि मुझे वहाँ अरेंज करना इजी हो मेरे लिए। ऑलराइट, सो प्लॉट योर रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 to 6 इन द ग्रिड। ओके, प्लॉट करना चाहते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर है 32.5 और लोएस्ट है हमारे पास 26, और वो कह रहे हैं कि आपके पास 2 डिग्री सेल्सियस का एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको 24 लेता हूँ, 26, 28, नो नो, इट्स नॉट गोना बी ऑल। हम इसको ही ले लेते हैं 24, then this is 26, then this is 28, then this is 30, then this is 32. It's going to be fine now. Then this is going to be 34. Okay, so इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 24, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, तो 24 and then 26 and then 28. Okay. 24, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. Just hold on a second, please. 26 minus 24 divided by 10. 0.2. So each has 0.2. So 24.2, 24.6, 24.8, 2, 4, 6, 8, and 10. Yes. Each small box has 2 degrees, 0.2 degree. So 24.2, 24.6, 24.8. Oh, my bad. 24, 2, 4, 6, 8, 10. Yes. Sure. So 24.2, 24.6, 24.8. My God, 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, that's right. My God, it's so tough to read such smaller grids. So we have hydrochloric acid 1 cm cube, and on 1 cm cube we have 26. The 1 cm cube per 26 is going to be like here. Then we have 2 cm cube per 28, 2 cm cube per 28. It's going to be like this. Then 3 cm cube per 30, 3 cm cube per 30 is like this. Then we have, okay, then we have 6, 6, 6, 6, 6. Okay, 6. Okay, 6, 6 per 6 per 30.5, 6 per 30.5. Okay, 6 per 30.5. This is 30. This is 30, 30.2, 30.4, 30.6. It has to be here, here. Okay. So 30, 2, 4, 6 here. Okay. Then 7 per we have 29. 7 per we have 29. 7 per we have 29 like this. It must be here. 27, 7 per 29. And 8 per is 27.5. 8 per is 27.5. 27, 2, 4, 6 here. Okay. According to the question, draw 2 straight lines through your point. One through the first 3 points. Okay, वो तो ये है.
Okay, and 1 through the last 3 points. अब वो ये है, my bad, how to just this. Okay, extend your straight line so that they cross. तो मैंने यहाँ cross कर दिया उनको, ठीक है? I hope it makes sense to you. Let's move on to the next part. The point on the graph where the two straight lines cross is where all of the aqueous sodium hydroxide reacts with all of the dilute hydrochloric acid to form a neutral solution. That's a very, very important statement. Very, very important statement. If you have a neutral solution, obviously, according to my lecture, the pH would be 7, right? Neutral solution का measure pH 7 होती है. So वो कह रहे हैं, use your graph in figure 2.1 to deduce the volume of dilute hydrochloric acid. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यहां से निकाल लेंगे हम. दिस मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये क्या है? 4 5 just hold. So this is 10.1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 0.1 1 2 3 4 तो 4.4. Yeah. So my answer is 4.4 cm³ here. Okay. So volume of hydrochloric acid is 4.4 cm³. Now we need to find out the volume of aqueous sodium hydroxide that react together to produce a neutral solution. Show you're working on figure 2.1. Yani figure 2.1. So guys, total volume of solution was 10 cm³, right? And volume of HCl is 4.4 cm³. अब ये जो आपके पास टोटल वॉल्यूम था सॉल्यूशन का 10 cm³, इसमें NaOH भी था, इसमें HCl था. तो इस 10 cm³ में से मैंने HCl निकाल लिया 4.4. सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों वैल्यूज को तो मुझे वॉल्यूम of NaOH मिल जाएगा, which is 10 minus 4.4. So it's going to be 6.6, I believe. Let me check. 10 minus 4.4. 5.6. Not 6.6, 5.6. So volume of NaOH is basically 5.6 cm³. Predict the pH of the solution in the boiling tube when the volume of C1 are mixed together. So when these two volumes are mixed together and you will get the neutral solution, obviously the pH is going to be 7. So just write 7. Let me check कि उसने 1 decimal, यहाँ पर उसने कोई decimal place use नहीं किया, तो मैं आंसर भी यहाँ पर as it is दूंगा. That is 7. Okay. All right. Okay. What is the conclusion actually? आप note करें. यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ HCl कंज्यूम हुआ, जबकि यहाँ पर मोर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज हुआ, राइट? तो अगर लेस अमाउंट इसका यूज हुआ है, इसका मतलब ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? और जब मोर वॉल्यूम यूज हुआ है, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो हम यहाँ से एक पॉइंट और कंक्लूड कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि लेस वॉल्यूम ऑफ HCl is used
then it means HCl is concentrated, क्योंकि क्योंकि जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है वो कम वॉल्यूम यूटिलाइज करता है, उसका वॉल्यूम कम यूज होता है. ओके, नेक्स्ट, deduce which solution dilute hydrochloric acid or aqueous sodium hydroxide is the most concentrated. Your answer to C1 to explain why. C1 से मैंने ही एक्सप्लेन किया है कि जी यहाँ पर कम वॉल्यूम यूज हुआ है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है. सो हम यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके. और एक्सप्लेनेशन क्या होगी? एक्सप्लेनेशन ये होगी कि लेस वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड as compared to sodium hydroxide to get the neutral solution. Okay. State how the pH and temperature recorded in each experiment would differ, if at all, if a polystyrene cup is used in place of the boiling tube. आप सब जानते हैं कि polystyrene cup, मैं पहले भी बता चुका हूँ, it absorbs negligible amount of heat, absorbs negligible heat because it is a good insulator. तो इसलिए pH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. No change in pH because polystyrene cup has nothing to do with the pH values, because pH values always depends on the concentration of the solution, right? Temperature पे बहरहाल change आ सकता है. अगर temperature it absorbs negligible heat, तो obviously temperature पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. Now the explanation is why, तो आप बताएंगे. This is because polystyrene cup is better insulator as it absorbs negligible amount of heat. अब जाहिर सी बात है, अगर आप पॉलीस्टाइरीन का यूज कर लेंगे तो उसमें हीट लॉस कम होगा, हीट लॉस कम होगा तो टेम्परेचर में यकीनन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. ठीक है. The volume of the solution used in these experiments were measured using a burette. All right. Explain why a volumetric pipette could not be used instead of a burette in this experiment. जाहिर सी बात है, पिपेट जो होता है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम यूज करने के लिए यूज किया जाता है, और पिपेट के ऊपर कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता. क्योंकि ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता, विच इज वाई पिपेट जो है वो इन वॉल्यूम्स को मेजर नहीं कर सकता. ठीक है. Because volumetric pipette has no graduation, so cannot measure these volumes. Cannot measure these volumes. That's the end of this question. Let's move on to the next question. That is question number 3. Okay. A student tests two substances, solid K and solid L. Okay. Test on solid K. The student dissolves solid K in water to form a solution K. Okay. The solution K. Okay. The student divides solution K into 4 portions. So हमारे पास एक solid है. ठीक है. ये हमारे पास solid K है.
हमने इसको उठाया और डिसॉल्व किया इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ के हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने इस के सॉल्यूशन को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया, यानी एक टेस्ट लाहौल, दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, दिस इज आवर सेकंड टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब एंड देन फोर्थ टेस्ट ट्यूब। ये जो सॉल्यूशन के है ये हमने थोड़ा थोड़ा हर टेस्ट ट्यूब में ले लिया। आफ्टर दैट हमने फर्स्ट पोर्शन जो था, आई मीन इन दिस टेस्ट ट्यूब, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया ऐड किया। तो जब हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया ऐड कर रहे हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। सॉल्ट एनालिसिस पे चलते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, एक्वस अमोनिया ऐड कर रहा हूँ, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। एक्वस अमोनिया ऐड कर रहा हूँ, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। दैट मींस इट माइट बी एल्यूमिनम और इट माइट बी जिंक। कैल्शियम के कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आते, इसलिए हमने कैल्शियम को निगेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स एल्यूमिनम आइन और जिंक आइंस कैन बी प्रेजेंट, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ से कंफर्मेशन नहीं हो रही कि ये एल्यूमिनम है या जिंक। इसका मतलब हमने जो टेस्ट किया था वो तो फ्यू ड्रॉप्स के लिए किया था एक्वस अमोनिया के, इसका मतलब हमें एक्सेस अमाउंट का भी टेस्ट करना है, ठीक है। सो वी नीड टू परफॉर्म excess aqueous ammonia test to confirm whether it's aluminum or zinc. Anyhow, ये जो हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब है, इससे रिलेटेड हमने क्या किया, इसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7 ऐड किया, पेल पर्पल सॉल्यूशन आया। वापस चलते हैं, पेल पर्पल सॉल्यूशन। भाई आपने पोटेशियम एसिडिफाइड ऐड किया, पेल पर्पल सॉल्यूशन कलरलेस में कन्वर्ट होता है, वहां कह रहा है पेल पर्पल सॉल्यूशन ही है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दैट इंडिकेट्स के सल्फाइड आयंस अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं सल्फाइड आयंस एब्सेंट, क्योंकि पेल पर्पल सॉल्यूशन रिमेन सेम, इट्स नॉट कन्वर्टिंग इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। तो सल्फाइड आयंस एब्सेंट। अब हम थर्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये वाली, और इस थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया, फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। क्रीमी प्रेसिपिटेट्स क्या रहे, वापस चलते हैं क्रीमी प्रेसिपिटेट्स पे। आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के थ्रू, आपको क्रीमी प्रेसिपिटेट्स मिले, इसका मतलब सॉल्यूशन कंटेन ब्रोमाइड आयंस, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रोमाइड आयंस प्रेजेंट। नाउ लास्ट जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, दिस वन, हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्वस क्लोरीन ऐड करी। हम सब जानते हैं कि एक्वस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, और सॉल्यूशन में हमारे पास ब्रोमाइड आयंस है। तो ब्रोमाइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा, और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयंस में। ओके, so that's the redox reaction we have done in the class in theory. So solution becomes orange. Orange is because of the formation of bromine. तो आप यहाँ लिखेंगे bromine appears या bromine is formed. Okay. Identify two cations the test one shows could be in solid K. तो आप जवाब देंगे aluminum, two cations, तो नाम नहीं मांग रहा, aluminum ion और zinc ions. Okay. Describe an additional test that could be carried out on solution K to confirm which of the two cations you have identified in A in solid K. Explain how you the test which of these. तो मैंने आपसे कहा था कि ये टेस्ट करना है हमें, क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं हो रही, राइट। सो हम करेंगे at
excess aqueous ammonia into the white precipitates. ठीक, अब जरा देखिए, जब हम एक्सेस एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो दे विल रिमेन इनसॉल्युबल, जबकि जिंक के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो सॉल्युबल होंगे एंड गिव यू अ कलरलेस सॉल्यूशन. ओके, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू राइट. जिंक आयंस, बल्कि इस तरह से नहीं, white precipitates dissolves, then zinc dissolves and give you a colorless solution, and colorless solution, then zinc present, and if and if and if white precipitates remains insoluble, then aluminum is present. Okay. Identify the anion in solid K. Bromide ions. Okay. Test on solid L. Solid L is barium nitrate. Guys, barium nitrate का formula मालूम होना चाहिए. It has barium ions and nitrate ions. इसका मतलब it has one cation and one anion. Complete the expected observation. The student carries out a flame test on solid L. Since solid L has barium, तो हम flame test पे चलते हैं. This is the flame test. Barium burned with a light green flame. Just write it down. Burned with light green flame. The student dissolves the remaining solid L in water to form solution L. The student divides solution L into three portions. अब यहाँ three portions हैं. पहला portion, दूसरा portion है ये आपका, ये portion A, ये portion B, and third portion is C. Okay. Okay, then to the first portion of solution L, the student add piece of aluminum foil and add 5 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide and warm the mixture. The student test for any gas produced. Observation. So what you can do is, कि आप नोट करो, आपने एल्यूमिनियम फॉयल ऐड किया, वार्म किया, few drops of aqueous sodium hydroxide ऐड किया, तो obviously अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी which turns damp red litmus paper blue. इसका मतलब नाइट्रेट आयंस अवेलेबल हैं. तो ये नाइट्रेट का टेस्ट है और उसने ऑलरेडी बोल दिया कि नाइट्रेट आयंस है हमारे पास. तो हम यहाँ बोलेंगे पंजेंट ammonia gas is given on, which turns damp litmus paper into blue. To the second portion of solution L, the student add 1 centimeter cube of dilute nitric acid and a few drops of aqueous silver nitrate. Observation. No change, because barium nitrate has no halide ions. Next, to the third portion of solution L, the student add 1 centimeter cube of dilute sulfuric acid. So when you add sulfate ions through sulfuric acid and you are getting white precipitates, then it means barium ion is present. So you have barium ions, you are adding sulfuric acid through
You are adding sulfate ions to sulfuric acid, obviously you will get the white precipitates. So white precipitates are formed. So that's the end of question number 3. Let's move on to the next question. That is question number 4, which is your planning and analysis question. Guys, planning and analysis is really tough. Really tough. The solubility of solid sodium sulfate in water changes as the temperature of the water changes. Okay. Plan an experiment to find out how the solubility of sodium sulfate in water changes with temperature. Basically, solubility changes when temperature changes. So यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि this solubility is going to be the dependent variable because we need to measure this. What we measure is dependent variable. So we are measuring solubility, and what we change is basically the independent variable. So what are we changing in this? I'm changing temperature because different temperature per solubility different होगी, right? So this is going to be the independent variable. It must be on the y-axis. It must be on the x-axis. One more thing. इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल वेरिएबल भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना. ओके, कंट्रोल वेरिएबल. हाँ, कंट्रोल वेरिएबल देखो, टेम्परेचर डिफरेंट कर रहे होगे लेकिन मास ऑफ सोडियम सल्फेट तो सेम ही रखोगे ना. Mass of sodium sulfate and distilled water needs to be constant throughout the experiment. तो ये आपका कंट्रोल वेरिएबल है. ओके, तो हम इसको प्लान कैसे कर लेते हैं? हम इसको प्लान इस तरह से कर लेते हैं कि हम कह देते हैं कि मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पर कि मैं 50 ग्राम 50 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर जो है वो बीकर में प्लेस करता हूँ. प्लेस 50 cm क्यूब of distilled water in 100 cm cube of beaker. Okay. Now, obviously, I need to consider some amount of sodium sulfate. So let's suppose at 10 gram of sodium sulfate, you can use any value, not necessarily 10 gram. You can use 5 gram, you can use 2 gram, you can use 1 gram, totally up to you, but we need to mention any value, right? So add 10 gram of sodium sulfate into the beaker. उसके बाद मैं क्या करूंगा? स्टर करूंगा मिक्सचर को. Stir the mixture to dissolve. ओके, जब डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद में ऑब्वियसली
स्टर करने के बाद stir the mixture to dissolve, और stir किसे करूंगा? थर्मोमीटर से. Stir the mixture to dissolve and measure the temperature. Through thermometer. Okay. Then after that, मैं जो भी solution होगा मेरा, मैं उसको filter करूंगा. Solution को filter करने के बाद जो मेरे पास residue आएगा उसका mass note down करूंगा. Measure the mass of residue. By using electronic balance. ओके. फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा विद डिफरेंट टेम्परेचर. और डिफरेंट टेम्परेचर हो सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, and then 50 degrees Celsius, यानी different and 55 and so on, right? Conclusion क्या होगा मेरा? Conclusion ये होगा कि as we increase the temperature, solubility of sodium sulfate increases. As we rise the temperature, solubility of sodium sulfate increases. All right. This indicate at the higher temperature, lesser mass of residue is obtained. रेजिड्यू का जितना मास मुझे मिलेगा, इसका मतलब सॉलिबिलिटी उतनी कम है. सॉलिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मास ऑफ रेजिड्यू भी कम होगा. ओके. सो दैट्स माय प्लानिंग. प्लेस 50 cm क्यूब. मैंने यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल सॉलिबिलिटी को हाईलाइट कर दिया. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईलाइट कर दिया. मैंने थर्मामीटर मेंशन किया है, बीकर मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेंशन किया है. Filter the solution through filter funnel and filter paper. ये भी तो लिख सकते हैं. And filter paper. Apparatuses वगैरह सब बताने होते हैं. ऑलराइट, क्योंकि उसने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस जितने हैं वो सब प्रोवाइड करो आप. So how many points we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and we have 6 marks. I think we'll get the whole complete marks in this. That's our question number 4. That's the end of this paper.